यूपी विधानसभा के स्पीकर माननीय माता प्रसाद पांडे जी मौजूद हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कृपया मंच पर पधारें। हमारे मुख्य वक्ता सद्गुरु जग्गी जी, यौगिक गुरु, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर विजय पी भटकर, जाने माने कंप्यूटर साइंटिस्ट, हमारे बीच पधार गए हैं। प्रोफेसर ए जयकृष्णन जी, केरला यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर साहब, हम आपका भी स्वागत करते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, युवा सांसद लोकसभा से, हमारे बीच पधार चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अनुराग दीक्षित, लोकसभा के एंकर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने सभी विशिष्ट अतिथियों से ये निवेदन करेंगे कि वो सभी कृपया मंच पर पधारें। हम गुजारिश करेंगे अपने छात्र नेताओं से कि हमारे आज के दोनों मुख्य वक्ताओं से सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी और विजय पी भटकर जी से जो सवाल पूछना चाहें, कृपया अपने सवालों को तैयार कर लें। अलग अलग पोडियम से हम उनके सवालों को लेंगे। मैं गुजारिश करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी से और हमारे मुख्य कन्वीनर भारतीय छात्र संसद के श्री राहुल कराड़ जी से कि वो हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले आज के सेशन के अध्यक्ष और यूपी असेंबली के स्पीकर महोदय माननीय माता प्रसाद पांडे जी, तालियों से हम स्वागत करेंगे स्पीकर महोदय का यहाँ विवेकानंद मंडप में। तालियों की कमी भारतीय छात्र संसद के मंच से कभी नहीं हो सकती। शुक्रिया। अब हम स्वागत अभिनंदन करेंगे यौगिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का। भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी। लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद। हम भारतीय छात्र संसद में उपस्थित सभी छात्र नेता स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ जाने माने कंप्यूटर विज्ञानी डॉक्टर विजय पी भटकर जी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और मित्रों, हमारे बीच एक और युवा प्रेरणा मौजूद है, अनुराग ठाकुर, सांसद लोकसभा, यंग पॉलिटिशियन आइकॉन। हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं इस मंच से। जी हाँ, राजनीति में पूरी सक्रियता के साथ अनुराग ठाकुर। हम प्रोफेसर ए जयकृष्णन जी का भी स्वागत कर रहे हैं, जो कि पूर्व बीसी केरला यूनिवर्सिटी के हैं। बहुत बहुत स्वागत जयकृष्णन जी। जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर ए जयकृष्णन। और यहाँ पर एक और युवा हमारे साथ लोकसभा टीवी के एंकर अनुराग दीक्षित, उनका भी हम यहाँ अभिनंदन करते हैं। चला कारवां अब न रुकेगा, चला है तूफान। तालियों से हम स्वागत करेंगे अनुराग का। चला कारवां रुकेगा, चला है तूफान। और आज कार्यक्रम को आरंभ करते हुए, आज के सेशन की शुरुआत करते हुए, जिसका शीर्षक है एम्ब्रेस डाइवर्सिटी प्रमोट यूनिटी, मैं आमंत्रित करूंगी पूर्व वीसी केरला यूनिवर्सिटी के और इस समय प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ए जयकृष्णन। उन्हें आमंत्रित करूंगी आज के विषय पर अपने विचारों के लिए प्रारंभिक भाषण दें। First of all, I would like to thank the MIT School of Government for inviting me to
this August function to offer opening remarks on the theme, Embrace Diversity, Promote Unity. India is a country that has unparalleled diversity, which no other nation on this earth can really match. In terms of our languages, in terms of our traditions, in terms of our culture, in terms of our food, in terms of our beliefs, in terms of our festivals, there is no nation on this earth which can match India's diversity. The diversity is also taken into other realms which are not so appreciable. For instance, in the realm of corruption, we have 2G gate corruption, then we have coal gate corruption, then we have cattle gate, we have fertilizer gate, and we even have coffin gate. So there is also kind of diversity in corruption. And since I come from a university, I also say that there is a diversity in terms of education here. We have state universities, we have central universities, we have private universities, we have deemed universities, and also we have fake universities. So we are a nation of great diversity from time immemorial. And if you look at India's strength, it has been this diversity which led to the unity of this country for millennia after millennia. When people were hounded out of various other cultures, for instance, when the Zoroastrians were hounded out of Persia, they came to Gujarat. And the Maharaja of Kutch provided them a sanctuary. And it's a very interesting story. The high priest of the Zoroastrians, because they are fire worshippers, they brought the fire from Persia. And they wanted a temple to be built for the fire to be kept. Then they said, we are an exclusive community, so we don't want to mix with the local population. The Maharaja asked why. And the priest, of course, had his own reasons, which I have no time to expatiate, but that was also granted. And the Maharaja asked the priest, if you are to keep yourself exclusive from mingling with the local Indian population, how are you going to get integrated to this society? And the priest replied, bring a bowl of milk and a few cubes of sugar. And the priest put the sugar in the milk and stirred it. And he said, this is inseparable. So we will be inseparable like this from the rest of the Indian community. And in turn, the priest asked the Maharaja, what exactly you want in return for the kind of hospitality that you have given us? The Maharaja said, as far as India is concerned, cow is a holy animal, so you shall not eat cow meat. And the Zoroastrians, the Parsis, used to eat cow meat, and till today, they have kept that tradition of not eating cow meat. When the Jews were hounded out of their holy land, they came to Cochin, and we built a synagogue for them. And it is still there in Cochin. When Islam was not spread across the world as much as it is today, Islam came to Kerala, and we built the first mosque, the Cheraban Mosque, in 618 AD. When Christianity came first to India, we built a church for them. This has been the tradition as far as India is concerned. Indian philosophy was concerned. The Hindu way of life was concerned, because we were all accommodating. Intellectually, spiritually, we did not see the divide between any thought process that happened anywhere else in the world, and it was seemingly integrated to the Indian culture. And if you look at the kind of ideologies, the kind of religious beliefs that this country has given birth, in spite of the fact that overwhelmingly the country was Hindu in nature, Buddha was born here. He was quite critical of the caste system as far as Hindu way of life was concerned, but he lived up to the ripe age of 85. He was not crucified. Jainism was born here. So was Sikhism. We were all accommodative. Nobody killed any of the religious leaders who preached a different way of life here. Every saffron-called beggar in this country is called Swami. Swami is God. But even for saying, I am the Son of God, Jesus was crucified. But no saint in this country has ever been crucified because of his religious propagation.
This is something that has been great in this country for ever so many millennia, I would say, and no other culture has any parallel with this Indian culture. But today, I see there are vociferous tendencies, separatist tendencies, based upon caste, based upon religious bigotry, and other nationalistic feeling, and I would say this is most unfortunate. So we need to debate about it to keep this culture alive and kicking for years to come. And the youth have to take the mantle for this, because the youth are going to be the so-called demographic dividend that we are talking about in 21st century. The youth are the mantle bearers of this great culture and civilization that India has been and is proud of for ever so many years. So I would say that this is going to be deliberations. There are very eminent speakers who are going to talk about this theme, unity and diversity as far as India is concerned. Let us live as brothers and sisters. Let us assimilate as many thoughts, as many ideas, as many philosophies that comes from even in alien cultures to this. Let us absorb, let us synthesize something new, because when there is a thesis, there is an antithesis, and synthesis evolves out of this interaction between the thesis and antithesis. This has been the philosophy of this nation, this great earth, and I would say that the youth are the mantle bearers of this great civilization. Thank you so much. और अब भारतीय छात्र संसद में युवा नेताओं को प्रोत्साहित करने का जो बीड़ा उठाया है, स्कूल ऑफ गवर्नमेंट राजनीति का पाठ पढ़ाने वाला विद्यालय जो यहाँ प्रारंभ किया राहुल जी के नेतृत्व में, उसी परंपरा को और उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छात्र नेता को आमंत्रित करूंगी मंच पर। छात्र नेता स्निग्धा श्रीवास्तव, जो कि इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं, पंतनगर उत्तराखंड से आती हैं आज के विषय पर बोलने के लिए। और मैं आपको बता दूं, स्निग्धा बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर भी हैं। जी स्निग्धा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। May we come together, sit together, speak together, eat together, and grow together. What a beautiful, beautiful philosophy. Namaste. It is my great privilege to address such an august audience. Our country, ladies and gentlemen, is special. Out of the 47 civilizations known to have existed, only 1 or 2 survived, and our nation is one of them. In just under a minute, I'll tell you why. India houses a diverse ethnography, 1,700 odd dialects, more than 100 tribes, over 13 races, and a gamut of religions concocting their own senses of music, dance, arts, theater, and way of life, but harboring the fundamental commonality of live, let live, and live while appreciating others. All of this led to Swami Vivekananda's reaffirmation of Vasudhaiva Kutumbakam, Sri Rabindranath Tagore's idea of pluralism, Satyajit Ray's belief of cultural intercourse, Sardar Patel's idea of national tolerance, Dr. Kalam's talisman of brotherhood, and Ashoka's thoughts on peace, as they all believed, and so do I, that diversity is the very root of unity, that diversity is the very root of strength. Monoculture will always lead to decay, multiplicity always to prosperity. Brothers and sisters, India is not a melting pot existing to achieve cohesion. Rather, we must become a bowl of salad searching for harmony, vibrant, colorful, and coexisting. Well, I'm an engineer, and therefore I prefer if every hypothesis is buttressed by a proof, and there exists one here too. It is called the diversity prediction theorem, which states that the diverse group almost always outperforms the group of the best by a substantial margin. So, we have a sort of an equation in our hands now. Diversity plus X equals utopia. What is this unknown variable X? What is actually barricading us from achieving this bliss? I'll tell you, it is the difficulty of embracing a kind of beauty that is different from ours, but opus Dei all the same. Maybe our cultures have not been marketed as well as that of the Westerners. Maybe we are not ready to jump out of a comfort zone. Maybe we are too egoistic, or simply we are very, very ignorant. However, media can come to rescue for this. Media is one of the most powerful tools of our age. And therefore, if our folk arts and traditions were to be broadcasted there in the commercial channels, as the resolution says,
It would revive the sentiments of appreciation and serve great good, just as the reforms in our education system has done, just as Spick McKay is doing, just as the corporates are doing, but on a much more massive scale. Bruce Tuckman, friends, gave a model for nation developing and team developing. He said that there are 4 steps to it: forming, norming, performing, and storming. The third one, storming, is where divergent groups come together and exchange their thought processes, where a sort of a rigor develops. And the final one is performing, where the nation rises up to the occasion as one, where the nation becomes great. Friends, even though I weep for the communal clashes and the all too frequent denunciation of each other, I am optimistic. I'm optimistic because this discussion is taking place. I'm optimistic because all of you are here. I'm optimistic because the change is inevitable. I am hopeful because the change is upon us. And I hope that India learns to embrace itself. And I hope that India be called the golden bird once again. I hope that India be called the golden bird once again. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया और हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं स्निग्धा, और मैं राहुल जी से निवेदन करूंगी कि इस युवा छात्र नेता को सम्मानित करें। हमारे इस भारतीय छात्र संसद के मंच से मित्रों, तालियों की गुजारिश मैं आपसे करूंगी। अगले छात्र नेता को हम बुलाएंगे, जिनका नाम है किरण शिवाधोनकर, जो कि बीएससी की स्टूडेंट है। और मैं बता दूं, किरण ने 2 किताबें भी लिखी हैं। बड़ी बात है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किरण का स्वागत करेंगे, अपने विचार रखेंगी। Good morning, everybody. Honorable dignitaries on the dais, amongst the audience, and dear student friends. We all are aware that we live in a country having extraordinary, enriching, and enduring diverse cultures. It is essential for the youth to understand and accept the significance of these diverse cultures, as it enables them to develop positive attitude and a broad horizon for having compatibility with these diverse cultures for the promotion of integrity. This could be easily achieved through education, institution of marriage, participation of the youth in socio-cultural, political, and planning activities of the state and nation, and 3th youth clubs, which is good work for the head, heart, and hands of the youth. These clubs must encourage the youth to participate in intra-culture, interculture, and state welfare activities. The government and educational institutions must promote the activities of these clubs, especially during the vacation of the youth, in order to utilize their leisure and to channelize their energy. Youth of today must be educated enough to spare time to cast votes to the right party and right people as they govern and give direction to the nation. Youth economic empowerment and stability is very essential to maintain peace and prosperity in the country. Hence, the youth must receive high quality of higher education in order to match up to the job market and to take up their own enterprise. Embrace diversity and promote unity demands for people's sensitivity to the uniqueness of the varied cultures, which encompasses acceptance, mutual respect, and tolerance. The electronic and print media could be very well utilized by holding ample programs to manifest each culture's uniqueness in terms of social, economic, educational, religious, political domains, and their contribution in the development of the nation. We must remember that all the Indian cultures are like pillars of the nation. If any one of them is weakened, it causes threat to the stability of the country. The youth of today, we the youth of today, are invaluable human resource of the nation. Youth are energetic, emotional, easily adaptable, skillful, knowledgeable, abstract thinkers, and above all, are responsible for the future of the country. If such exposure is given to the youth right from their childhood and by their families, it is definitely possible to have national integration. Friends, I would like to conclude with a short poem written by me during my school days. From my life, I've learned that ambition begets ambition. This originates from imagination.
Without ambition, life has boredom and frustration. With this realization, I started to have ambitions, and it led to continuous multiplication. Then I started ambitions filtration. It refined my vision and helped in goal fixation. So, my dear friends, to embrace diversity and promote unity should be our ambition, and I'm sure the incredible youth of today will definitely make it a reality. Jai Hind. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद किरण। और सम्मानित करेंगे हम इस युवा छात्र नेता को। इस मंच से तालियों की गड़गड़ाहट से हम इनका हौसला बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही लंबा राजनीतिक अनुभव जिनके पास है, जिन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया है, जिन्होंने समाज के गरीब, पिछड़े, दलित और हाशिए पर पड़े लोगों की बेहतरी के लिए काम किया है। जी हाँ, यूपी असेंबली के स्पीकर महोदय माता प्रसाद पांडे जी का सानिध्य हमें मिला है। हम बड़े आभारी हैं उनके। इस छात्र संसद के आयोजक जी, सर्वप्रथम मैं हिंदी बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। हम हिंदी प्रदेश से आते हैं, हमारी मुख्य भाषा मेन भाषा हिंदी है। मैं सर्वप्रथम इस शिवाजी की वीर भूमि, लोकमान्य तिलक जी के क्रम भूमि, गोखले जी के राजनैतिक भूमि को, पुणे की इस धरती को प्रणाम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का हम स्मरण करते हुए उनको नमन करते हैं। मैं जो आज इसके साथ ही साथ मैं आप सभी छात्र संसद में उपस्थित नौजवानों को नए वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। आज जो विषय हमारे सामने है, सर्वप्रथम प्रोफेसर साहब ने उसमें विस्तार से चर्चा की है। भारत विविधताओं का देश है। हमारे पूरे भारत में रंग का भेद है, कहीं गोरे हैं, कहीं काले हैं, हमारे चेहरों में भी भेद है। अगर आप मेघालय जाएंगे, असम जाएंगे, बंगाल जाएंगे और पंजाब जाएंगे, उत्तरांचल जाएंगे, तो चेहरों में भी भेद है, विविधता है। इसी के साथ साथ हमारे अपने कल्चर हैं, उनमें भी बड़ी विविधताएं हैं, जिसे आप डाइवर्सिटी कहते हैं। साथ ही साथ हमारे जो ये पहनावे हैं, वेशभूषा है, इसमें भी विविधता है। हमने धार्मिक, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम लोग धर्म में भी एक साथ नहीं है, उसमें भी हम लोगों में जगह जगह अलग अलग उसके भेद है। भाषा का तो कोई सवाल ही नहीं, भाषा तो विभिन्न भाषा में हिंदुस्तान में भाषाएं चल रही हैं। और आपकी तो बात यहाँ छोड़िए, प्रदेश की भाषा, हमारे प्रदेश में 20 किलोमीटर की बोली बदल जाती है। यानी इतनी विविधता इस हिंदुस्तान के ज़मीन पर है, उसके बाद भी हम आज एक हैं। हमने एकता का शपथ लिया है। हमारी एकता कैसे आगे बढ़े, नौजवानों, इसे आपको सोचना है। हमारे 250 वर्ष के संघर्षों के बाद जो हमारी आज़ादी आपके बीच में आई, जिसने आपके लिए विकास का रास्ता संकल्पित करके खोलने का प्रयास किया, जिसने एक हमको संविधान दिया, उस संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया। उस संविधान के तहत सारे हिंदुस्तान के लोगों ने उसके प्रेम्बुल में लिखा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हम सब लोग मिलकर इस संविधान को आत्मसात करते हैं और उस संविधान में हमारी एकता का, हमारे समानता का, हमारे बहुत से उसमें हमें सेफ गार्ड दिए गए हैं। इस संविधान के माध्यम से हमें अपने देश की एकता को और प्रमोट करने का अवसर हमारे संविधान निर्माताओं ने, परम पूज्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव के द्वारा लिखित इस संविधान में हमें दी गई है। हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारा आर्टिकल 19, हमारा आर्टिकल 30, हमारा आर्टिकल 14, ये हमें वो अवसर देते हैं, विभिन्नताओं के बावजूद भी, डाइवर्सिटी के बाद भी, कि हम आज एक हैं। हमें समानता का अधिकार है, चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे गोरा हो या काला हो, संविधान ने हमें सबको समानता का अधिकार दिया है। और साथ ही साथ इस संविधान ने
हमें एक नागरिक का अधिकार दिया है, दो नागरिकता नहीं है, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो मेघालय का हो, चाहे नेपालैंड का हो, सबकी नागरिकता एक हमारे संविधान से दी गई। ये हमारी एकता का सबसे बड़ा ताकत है, हमारी एकता को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाकर हमें दी है। अब इस संविधान में हमें तमाम प्रकार के अधिकार हैं। हमारी इस डाइवर्सिटी को संघर्षों में न बदले, इसकी भी व्यवस्था इस संविधान में की गई। संविधान में अल्पसंख्यकों को भी दिया गया, उन्हें शिक्षा स्कूल बनाने का अधिकार दिया गया, उन्हें अल्पसंख्यक होने के लिए भी कुछ प्रोविजन किए गए। तो इस तरह से जो हमारा ये संविधान है, हमारी एकता को इन विविधताओं के बाद भी और मजबूत करता है और इसे आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व वहन करता है। अब जिम्मेदारी किसकी है? इस संविधान के अनुसार इस देश को चलाए, इसकी रक्षा करे। जो वर्तमान लोग हैं, अब इनका समय समाप्त हो रहा। नौजवानों, हिंदुस्तान के भविष्य आप हो। आने वाला दिन, आने वाला भारत आपके कंधों पर चढ़ के बोलेगा, इसलिए आपको इस पर गंभीरता से आज सोचने की जरूरत है। इस विविधता के बाद भी हम कैसे इस एकता को और आगे प्रमोट करें। जो स्थितियां बन रही हैं, जगह जगह स्थितियां बन रही हैं, कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर संघर्ष होता है, लगता है कि देश की एकता अब खतरे में पड़ने वाली है। लेकिन नौजवानों, जब कभी हम संविधान की तरफ निगाह डालते हैं तो फिर हम पाते हैं कि नहीं, हमारा देश एकता को और आगे ले जाएगा, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये जिम्मेदारी आज हमारी और आपकी है कि इस एकता को कैसे हम प्रमोट करें, यूनिटी को कैसे प्रमोट करें। नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी। आज जो युवा वर्ग है, इसके कंधों पर भार है। आज छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटे छोटे इशू को लेकर के जगह जगह नौजवान आंदोलित है, उद्दोलित है। नौजवान के अरमान है, नौजवान की तमन्ना है। उसके अरमान जब तक पूरे नहीं होते हैं, तब तक उसे संघर्ष करने की मादा ने उसे प्रेरित कर रखा है। इस चीज को हमें समझना है और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, उसे आप रचनात्मक प्रक्रिया के तरफ आप जब ले जाएंगे तो हमारी एकता, हमारी यूनिटी अपने आप प्रमोट होती चली जाएगी। लेकिन अगर उसको हम विध्वंसक कार्यों में लगाएंगे, हम उसे अलग ढंग से ले जाएंगे, तो हमारी एकता को खतरा पैदा होगा। इसलिए नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप निभाओ। मैं समझता हूं कि यहाँ जितने भी आए हैं, सब पढ़े लिखे विद्वान हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब प्रोफेसर हैं। ये एकता हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारे प्रेम भाव से, हमारे सद्भाव से प्रमोट होगी। सब कानून बनाकर ही नहीं किया जा सकता। बहुत से कानून बने, उसका पालन नहीं होता। कानून तो बना है चोरी ना हो, लेकिन रास्ते में चेन स्नैचिंग हो जाती है। कानून तो है नहीं होना चाहिए, लेकिन इस एकता को, इस विविधता को रखते हुए, देखते हुए इस एकता को बनाना, इस एकता को प्रमोट करना हमारे और आपके उत्तरदायित्व है। मैं कानून की बात नहीं करता, संविधान की नहीं बात नहीं करता। आज शिक्षा में, व्यवस्था में कितना बड़ा भेद पैदा होता जा रहा है। इस भेद को कैसे खत्म किया जाए, मैं समझता हूँ ये युवा छात्र संसद उस पर गंभीरता से विचार करेगी। और अगर आप इस पर विचार करेंगे तो नौजवान ही परिवर्तन का प्रतीक होता है। याद रखना अपने मन में नौजवानों, हमेशा नौजवान परिवर्तन का प्रतीक होता है। चाहे 1942 की क्रांति रही हो आज़ादी की, चाहे और जो कोई क्रांति हो, नौजवानों ने जब बढ़ करके अपना कंधा आगे बढ़ाया है तो देश में परिवर्तन आया है, राजनीति में परिवर्तन आया है, विचारधाराओं में परिवर्तन आया है। इसलिए नौजवानों, आज मैं आपका आह्वान करता हूं इस परिवर्तन के लिए, इस छात्र संसद से एक संकल्प लेना कि हम इस देश में जो विविधता के होते हुए हमारी एकता प्रभावित हो रही है, उस प्रभावित होने से हम उसे रोकेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और अपील करता हूं। आप यहाँ बैठे हो, हजारों की संख्या में हो, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो, आपके माँ बाप आपके शिक्षा का वहन कर रहे हैं, लेकिन आपसे इतर लाखों नौजवान ऐसे हैं जो सड़कों पर शिक्षा के अभाव में, धनाभाव में अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इस संसद में उसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर ये इसी तरह से घूमते रहेंगे, इसी तरह से बेरोजगार बनकर सड़कों पर घूमेंगे, भूखमरी के शिकार होंगे, तो स्वाभाविक है हमारी एकता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इस पर भी आज विचार करने की जरूरत है कि हम इसे कैसे ठीक से आगे ले चलें जिससे हमारी एकता बरकरार रहे। मैं बहुत ज़्यादा
कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि समय बधा है, मैं स्पीकर हूँ और स्पीकर को कम बोलना चाहिए। स्पीकर स्पीक लेस, हम तो बोलवाते हैं, सबको मना करते हैं बैठो। मैं आप सबको और इस संसद के आयोजक को मैं धन्यवाद देता हूँ। जुलाई में प्रकाश कराड़ जी मेरे पास गए थे तो मैं ये उम्मीद नहीं करता था इनकी इस तरह की संसद होगी। जुलाई में हमारा संसद विधानमंडल की बैठक समाप्त हुई, मैंने आने का वादा किया। वैसे पूना मेरा पहला आगमन नहीं है, मैं पूना बहुत बार आया हूँ, आज़ादी के बारे में आया हूँ, आंदोलन के बारे में आया हूँ। आज़ादी माने 1947 के बाद वाली आज़ादी, जब यहाँ चाहे वो इमरजेंसी रही हो तब भी आया हूँ। मैं पूना के वासियों और नौजवान साथियों, फिर आपका मैं आह्वान करता हूँ, हम लोगों का समय धीरे धीरे स्नेह स्नेह, हमारे आज़ादी के दो योद्धाओं का कल्पना, उनका संकल्प, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी वो पूरा नहीं हुआ, यहाँ से संकल्प लेके जाना इस संसद से कि उसको पूरा करोगे और देश की एकता और अखंडता इस विविधता के बाद बचाए रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। I request all the student leaders to give a standing ovation to Honorable Speaker, Uttar Pradesh Assembly. He has come with a lot of commitment and he said that, Rahul, I appreciate this concept that student community, the younger generation must come in public life. So he has, the other day the President of India was in Uttar Pradesh and there were a number of programs, but through his busy schedule, he is here with us. Sir, thank you so much. I have no words to express my gratitude for you. जिस तरह से भारतीय छात्र संसद युवाओं को मौका दे रही है, राजनीति में आगे बढ़ने का, प्रेरणा का स्रोत बन रही है, इसके लिए हम शुक्रिया करना चाहते हैं। और युवा विधायकों को पुरस्कार की ये जो परंपरा शुरू की गई है, उसका भी मकसद यही है, युवा विधायक पुरस्कार, आदर्श युवा विधायक पुरस्कार। और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर नोहर हनुमानगढ़ से अभिषेक मटोरिया, जो कि बीजेपी के विधायक हैं और उनको चुना गया है इस बार आदर्श विधायक पुरस्कार के लिए। कृपया मंच पर आएं। तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं और गुजारिश करते हैं माता प्रसाद पांडे जी और हमारे अन्य विशिष्ट अतिथियों से कि उनका अभिनंदन करें और इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित करें। मैं आपको बता दूं, अभिषेक मटोरिया यंगेस्ट एमएलए बनने का गौरव अगर किसी को मिला है तो आपके सामने वो शख्सियत खड़ी है। स्वामी जी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित तृतीय भारतीय छात्र संसद इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट पुणे के इस प्रोग्राम में ऑल ऑनरेबल गेस्ट, ऑल माय फेलो मेंबर्स, इट इज एन ऑनर. दिस इज the words are not coming because I am being facilitated by you, but in my 8 years of political life, I was the youngest ever chairman of any municipal corporation, any national sports federation, and now the MLA from a party. I thank Mr. Karad and the entire team of MITSOG. This is something very different I have not seen in my entire 8 years of political career. Swami ji ने हमेशा ये संदेश दिया था, take patriotism out of politics and create possibilities. 1.8 अरब इस दुनिया में युवा है, उसमें से 37.6 मिलियन यूथ जो आज इंडिया में, उनको जो आप संदेश दे रहे हो, ये इसलिए नहीं आ रहा, मैं दोबारा कह रहा हूं क्योंकि आपने हमें सम्मानित किया है. यू आर इंस्पायरिंग यूथ टू जॉइन पॉलिटिक्स एंड अ डिजायर विच चेंजेस nothing, a decision changes something and a determination which changes a lot of things, जिस पे आपका सारा का सारा प्रोग्राम बेस्ड है. I salute the entire organization. Thank you so much. और अब स्टेज पर मैं आमंत्रित करूंगी एक और यंग एमएलए श्री पवन दुग्गल, अनूपगढ़ गंगानगर से सीपीआईएम के यंग विधायक. उनको भी हम आदर्श युवा विधायक का सम्मान दे रहे हैं. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नौजवान एमएलए का हम यहाँ स्वागत करेंगे भारतीय छात्र संसद की ओर से. मैं आपको बताऊं, पवन दुग्गल बड़े ही साधारण और एक गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद राजनीति में अपना एक मकाम हासिल किया है. आपने लेक्चरर के रूप में भी काम किया, बाद में आप पंचायत में शामिल हो गए, प्रधान बने, किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस युवा विधायक का सम्मान कर रहे हैं. मैं गुजारिश करूंगी एक छोटा सा संदेश हम युवाओं के नाम. भारतीय छात्र संसद के इस तीसरे महाधिवेशन में मैं राजस्थान के तमाम युवाओं की तरफ से मिस्टर राहुल और उनकी तमाम टीम का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार वर्तमान के अंदर युवा राजनीति से पीछे हटता जा रहा है
और युवाओं के अंदर एक संदेश है और एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक युवा होने के नाते मैं फीलिंग करता हूँ कि एक घृणा की भावना सी आ गई है कि राजनीति के अंदर कहीं गड़बड़ है, राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। हम अभी हमारे साथी अभिषेक मटोरिया आए थे, ये चेयरमैन थे, मैं मेरी पंचायत समिति का प्रधान था और जनता ने हमें चुन के राजस्थान की असेंबली के अंदर भेजा है। मैं समझता हूँ साथी जो मिस्टर राहुल है, उनका ये जो प्रयास है, आने वाले समय के अंदर अगर अच्छी राजनीति होगी, अच्छे युवा आएंगे और देश में एक बहुत बड़ा चेंजिंग होगा, तो इसका श्रेय निश्चित रूप से MIT, आप तमाम नौजवान जो आज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो और मिस्टर राहुल एंड इस ग्रुप को जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूं आदर्श युवा विधायक के पुरस्कार के लिए श्रीमती संजना अग्री जी को। मंच पर पधारे सोजत पाली से भारतीय जनता पार्टी की यंग MLA। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे संजना। महिलाओं की भूमिका राजनीति में बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी अगर हमारी युवा बहनें संजना जैसी राजनीति में आएंगी। मैं आपको बता दूं, BA तक शिक्षा हासिल की है, कंप्यूटर डिजाइनिंग करती हैं और जनता की सेवा भी करती हैं। महिलाओं की प्रेरणा है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगी संजना? इस धन्य धरा को मैं सशक्त नमन करती हूँ कि भारतीय छात्र संसद के तीसरे अधिवेशन में मुझे एक राजस्थान में पाली जिले की सोजत मेहंदी नगरी की विधानसभा से विधायक होने के नाते मुझे आज यहाँ आने का ये अवसर जो मिला है, मैं तमाम भारतीय छात्र संसद की संस्था, इससे जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ ही महाराष्ट्र इकाई का, जिन्होंने भारत निर्माण के महत्वपूर्ण मसले पर इस तरह के विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं यहाँ पर युवा शक्ति से निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे स्तर से होनी चाहिए। सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कॉलेजों और सभी शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर ये अपने MIT कॉलेज में जो छात्र संसद का कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए और देश की युवा शक्ति जो राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और हमारे युवा शक्ति को आगे लाना है तो हम सबको मिलकर राष्ट्रवादी सिद्धांतों और रचनात्मक कार्य के लिए गांव-गांव में जाकर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। हमारे युवा शक्ति के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर मैं उन्हें नमन करती हूं और उनका नारा मुझे आज ये याद आ रहा है कि जागो, उठो और न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। युवा साथियों, तभी अपने राष्ट्र का निर्माण होगा। धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित करेंगे लोकसभा टीवी के एंकर अनुराग दीक्षित को कि वो आए और अपने विचार आज के विषय पर रखें। अनुराग। इस मंच पर उपस्थित अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज सम्मानित लोग और मेरे सामने पहली पंक्ति में बैठे वो लोग जो अपने अपने क्षेत्र में इतना नाम कमा चुके हैं कि वो आदर्श बन चुके हैं, इस युवा पीढ़ी के लिए भी एड गुरु मुझे सामने दिख रहे हैं। बांग्लादेश की तस्वीर बदलने वाले यूसुफ सर मेरे सामने दिख रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरज सिंह जी मुझे सामने दिख रहे हैं और भी तमाम इस तरीके की शख्सियत हैं। आप सबका लोकसभा टेलीविज़न की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ स्वागत करता हूं इस महाकुंभ में उपस्थित तमाम युवा लोगों का भी, छात्रों का भी, छात्र नेताओं का भी। मित्रों, मुझे जो विषय दिया गया है वो है विविधता में एकता से जुड़ा हुआ। वैसे तो पत्रकारों को ज़्यादा बोलने की आदत होती है, लेकिन मुझसे कहा है कि 3 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा। विविधता में एकता का जो सबसे बड़ा मंच है वो है भारतीय संसद। भारतीय संसद में जब आप देखते हैं कि बारामूला जम्मू कश्मीर से चुना हुआ एक सांसद, कन्याकुमारी त्रिवेंद्रम से चुना हुआ एक सांसद, गुजरात के कच्छ से चुनी हुई एक सांसद और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई एक सांसद, अलग अलग राज्य, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग कपड़े, अलग अलग तरीके की संस्कृति, उन सब की झलक आपको दिखती है देश की सबसे बड़ी संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में। और उसी झलक को आप तक लाने की कोशिश करता है लोकसभा टेलीविज़न।
मुझे पता चला कि यहाँ जो इस मुद्दे पर संकल्प पारित होना है उसमें ये अपील की जा रही है तमाम निजी टेलीविज़न चैनलों से कि आप भारतीय परंपरा, कला, संस्कृति इनसे जुड़े कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोकसभा टेलीविज़न पर आप आज भी भारत एक खोज जैसा कार्यक्रम देख सकते हैं। इस तरीके के तमाम कार्यक्रम हैं जिनकी पहल की गई है लोकसभा टेलीविज़न पर। हाल ही में भारत के जो तमाम मेले हैं जो परंपरा को झलकाते हैं उनको लेकर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरज सिंह जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके अलावा और भी तमाम कार्यक्रम हैं। इस मंच का फ़ायदा उठाते हुए मित्रों, मैं आप लोगों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि हम निजी चैनलों से ही सारी उम्मीद क्यों करें। देश का सबसे बड़ा चैनल डीडी न्यूज़, आप उसे देखिए। देश की सबसे बड़ी संसद का पहला चैनल लोकसभा टेलीविज़न, आप उसे देखिए। उसका सहयोगी चैनल राज्यसभा टीवी, उसे देखिए। ये चैनल आपके हैं, आप अपने सुझाव दीजिए, अपनी शिकायतें दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी व्यवस्थागत बदलाव ला सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपको दिखा सकें। इन सब के बीच मैं जो बुनियादी मुद्दा है विविधता में एकता, उसी पर आऊँगा। विविधता में एकता की क्या परिभाषा है, तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन मित्रों एक बात जो पिछले 3 दिन में मैंने यहाँ महसूस की, इस भारतीय छात्र संसद में, देश के अलग अलग कोनों में मैंने दौरा किया एक पत्रकार के तौर पर, लेकिन छात्रों का ऐसा जनसैलाब मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। वास्तव में आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यही लोकतंत्र की सच्ची झलक है जो यहाँ सामने दिख रही है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोग आप हम सबको यहाँ सुन रहे हैं। आपकी सहनशीलता को भी प्रणाम, धन सशत नमन। इन सब के बीच जो एक बात सबसे अहम थी इस पूरे अधिवेशन में, वो ये कि किसानों की आत्महत्या और गरीबी, जिस पर संभवतः अगली चर्चा होनी है, ऐसे मुद्दों पर भी आप इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं, तमाम लोगों को सुन रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। काश ऐसी गंभीरता हमारे नीति निर्माताओं ने दिखाई होती तो इन मुद्दों पर अब चर्चा करने की जरूरत ही नहीं बचती। 2 जनप्रतिनिधि तो चुने हुए यहाँ बैठे हुए हैं मेरे साथ, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, पिछले 15 सालों में, मैं बहुत कम समय लूँगा, किसानों की आत्महत्या को लेकर मित्रों पिछले 15 सालों में 2,90,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कल जब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, करीब 2 घंटे चर्चा करी हम लोगों ने और सुझाव तमाम तरीके के सामने आए, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि उन 2 घंटों के बीच में हमारे देश में लगभग 4 किसान आत्महत्या कर चुके थे, क्योंकि इस देश का इतिहास बताता है कि हर 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दोषी कौन है? हमारे नीति निर्माता, हमारी नीतियाँ। काश इतनी गंभीरता अगर पहले दिखाई गई होती तो ये 2,90,000 करोड़ का आंकड़ा हमें ना दिखता। गरीबों का मामला जिस पर अभी चर्चा होनी है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सब जानते हैं कि भारत में गरीब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कितने गरीब हैं ये कोई नहीं जानता। 22 रुपये से मामला शुरू होता है और 100 रुपये 150 रुपये पर जाकर ख़त्म होता है। सबसे जटिलतम समस्याओं में से एक समस्या ये बन गई है दुर्भाग्य से हमारे देश में कि हम गरीबों की संख्या को समझ सकें। लोकसभा टेलीविज़न जाना जाता है अपनी गंभीर पत्रकारिता के लिए, सनसनी हम लोग नहीं फैलाते हैं। तो जो विविधता में एकता का मुद्दा है उस पर भी कुछ बातें मैं ज़रूर कहूँगा आप लोगों से। ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो यहाँ कहीं जा रही हैं अब तक, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि यूपी और बिहार का आदमी मुंबई जाने से पहले डरता है? इस तरीके के कुछ सवाल हैं, जरा अपने अपने जहन में सोचिएगा। क्या वजह है कि पूर्वोत्तर का कोई बच्चा दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में जब आता है तो उसको लगता है कि उसके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार हो रहा है? क्या वजह है कि नक्सलवाद पनप रहा है? क्या वजह है कि जो लोग जिन घरों में रहते आए थे उन घरों को छोड़ने को मजबूर हैं? इस तरीके के मुद्दों पर भी जरा सोचना होगा और इस तरीके के मुद्दों के लिए दोषी कौन है ये भी समझना होगा। अगर विविधता में एकता की परिभाषा बदल रही है तो उसके लिए दोषी आप नहीं हैं, राजनीतिक व्यवस्था उसके लिए दोषी है। इसको बदलना होगा। माता प्रसाद जी अभी कह रहे थे कि आप युवाओं का देश है, आपको अब तस्वीर बदलनी है। परसों से ये कहा जा रहा है कि हमारे देश की जो 65% आबादी है वो युवा है। मैं तब से ही बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि जब मैं भारतीय संसद को देखता हूँ तो बड़ी अजीब सी स्थिति दिखती है। बहुत संक्षेप में मैं आपको जो संसद की विविधता है उसको समझाना चाहूँगा मित्रों। पहली लोकसभा में 25 से 30 साल की उम्र के जो चुने हुए सांसद थे उनकी संख्या थी 28। चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि हम लेट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे गूगल, आप सब लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं, तो पहली लोकसभा में अपेक्षाकृत ज़्यादा युवा सांसद थे तुलना के 15वीं लोकसभा के, जो अभी मौजूदा लोकसभा है। ये किस तरीके की तस्वीर है?
अगर तमाम राजनीतिक दल लोग गंभीर हैं और वो ये चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी बढ़े, तो आप आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। जितने फीसदी आबादी युवाओं की है इस देश में, उतनी सीटें आप निर्धारित कीजिए। चलिए आरक्षण रहने दीजिए, आप लोग महिला आरक्षण विधेयक भी आज तक नहीं ला पाए हैं, एक आम सहमति बनाइए। आप ये तय कीजिए कि 545 लोकसभा की सीटों में 100 सीटें कम से कम युवाओं की होंगी। अनुराग ठाकुर यहाँ बैठे हुए हैं, भारतीय युवा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये तय करें, अपनी पार्टी के स्तर पर ये फैसला लें। बहुत मुश्किल होता है मित्रों, परिवारवाद भी एक बड़ी समस्या है, ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा उस पर, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जिसकी शुरुआत यहाँ राहुल करात जी ने की है, ये अपने आप में एक अनोखी पहल है। अक्सर जब मैं भी विधानसभाओं को कवर करता हूँ तो सांसद, स्पीकर इस बात पर चिंता जाहिर करते हैं कि जनप्रतिनिधि बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ नहीं आते। पिछले इतिहास भी अगर हम देखें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमय, पीलू मोदी, ज्योतिर्मय बसु, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे बहुत नाम हैं जो हम जाने जाते हैं चर्चा के लिए। लेकिन अगर हम पिछली 14 लोकसभा को देखें तो लगभग 5000 सांसद चुने गए हैं और ऐसे नाम बमुश्किल 50 ही बैठते हैं। अगर ऐसा स्कूल तब होता तो ये संख्या भी बहुत ज़्यादा होती, यकीन मानिए। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर राहुल करात का जिन्होंने इस तरीके की पहल की है, और ये उम्मीद करूंगा आप लोगों से भी कि आप लोग ये बदलाव लाएंगे अपने अपने क्षेत्र में। पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा यकीन मत कीजिए मित्रों, बदलाव आपको खुद लाना है। यही ज़मीनी हकीकत है, यही सच्चाई है। आप वादे कर सुन सकते हैं, भाषण सुन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तालियां बजा सकते हैं, लेकिन फैसला आपको खुद लेना है। जी आखिर में मुझे पता चला कि यहाँ पर 6000 से ज़्यादा छात्र छात्रा हैं जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। मित्रों, भारत गांव में बसता है, हमारे देश में लगभग 6 लाख ही गांव हैं। अगर गुणा भाग करके देखें तो एक गांव के लिए 100 छात्र औसतन आते हैं जो इस भारतीय छात्र संसद में शिरकत कर रहे हैं। अगर 100 छात्र एक एक गांव को बदलने का बीड़ा उठा लें तो यकीन मानिए पूरा भारत बदल जाएगा, और ये बदलाव आप ही ला सकते हैं इसी भारतीय छात्र संसद से। 100 लोगों की संख्या बहुत होती है एक गांव के लिए। आखिर में खत्म करते हुए ये बताइए, इस पूरे सम्मेलन में जो शुरू हुआ है पिछले 3 दिन से, कितने लोगों को आनंद आ रहा है? हाथ उठाइए। और इस आनंद में, इस जानकारी में, इस महाकुंभ में जो संचालिका हैं उनकी भूमिका कितनों को अहम नजर आती है? हाथ उठाइए। एक बार जोरदार तालियां नीलम शर्मा जी के लिए। हो गया अनुराग। थैंक यू। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझ जैसे देश के लाखों लोगों की प्रेरणा की स्रोत हैं। आप इनका कार्यक्रम देखा कीजिए, आपको जानकारी काफी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे मित्रों, जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक इस देश के, जो कि भारत में सुपर कंप्यूटर्स को लेकर आए हमारे बीच, उनका सानिध्य हमें प्राप्त है। डॉक्टर विजय पी भटकर जी। आदरणीय माता प्रसाद जी, most revered and respected contemporary spiritual guru Jaggi Vasudev ji, Professor Vishwanath Karad, my very dear friend, and our young leader Rahul, I consider today I am standing on this dais before you third time. Now I consider it a singular privilege for me to share with you some thoughts, an enunciation, a hypothesis on the 150th birth anniversary of the great son of India, Swami Vivekananda. The name of Swami Vivekananda is echoing, reverberating, not only here but across India on this day. And if one message has to be taken from Swami Vivekananda, the message which received great acclaim in the first Parliament of Religion at Chicago, it is this message
the very theme of this session, embracing diversity and realizing, internalizing and promoting unity. When he addressed the first parliament, my dear students, one enunciation, one thought, he was the 20th speaker, given only 4 minutes. And I would like to read verbatim that sentence which changed the whole complexion of the parliament. And he said, I quote, as the different streams having sources in different places all mingle their water in the sea, so, Lord, the different paths which people take through their different tendencies, various though they may appear, all lead to thee. One after another, the speakers were arguing the superiority of their religions. And Swami Vivekananda rises and says this. He was the first one to give the message of unity of all religions. And that message came from India. We are very proud of that, this country. Really. At that time, there was a lot of quarrels. When he left India, there were a lot of quarrels across different sects, different faiths, different thoughts, right in India. In fact, his very presence in the parliament was questioned by our own leaders, Hindu leaders. At that time, he gave this message, and that's why Swami Vivekananda symbolizes that unification of the diversity. He was the first one to give the message that diversity must be respected and celebrated. One after another on this dais, and I was so pleased as our young students from you, Snigdha or Kiran, were addressing so passionately on this theme. If at all we could internalize what we articulate and what we speak, then I have no doubt that the dream of Swami Vivekananda for the 21st century will be realized. Swamiji harmonized for the first time different religions, the philosophies of different religions. Science and philosophy or science and religion were kept separate. He harmonized that, and he gave that unified message for the whole humankind. I have one theorem to put before you. Those of you come from science or philosophy will appreciate that. In this world, as has been told by Professor Jayakrishna, and how India embraced, he was the origin of several religions, main religions of the world, and India embraced several religions and faiths. We have many languages, we have many customs, and you see infinite diversity. Diversity is not limited. The diversity in the universe is infinite, countless. If you look at your Aadhaar card, and the basis of Aadhaar card is this, that we have 7 billion people on this earth today, and the number is increasing. We'll have soon 10 billion people in few years. But no two fingerprints really match how this unity is created. No two fingerprints will ever match. In our own body, there are trillions and trillions of cells. But each cell which can be individually addressed. The beauty of our anatomy or physiology or biology is that in the body, each cell can be uniquely addressed. We are the proof of diversity ourselves. And when we talk about diversity, know that, I think that is the theorem. When you say diversity, and countless diversity, there is a unifying principle behind that diversity. For example, we ourselves, which has got trillions of cells, we emanate from a single cell
in mother's womb, the fertilized cell. From single cell, these trillions of cells are created with each different from mother. This is to be admired. And when you see these conflicts, these differences, this acrimony amongst us, that which place we come from, we are Bihari or we are a Maharashtrian, we are a UPian or what we are a South Indian, we are a North Indian. We see the conflicts across languages because we speak different languages. Friends, it's a shame that we are not able to appreciate the nation which has given this philosophy, this culture of Advaita, and this culture and given the message. And it is for this reason, as Snigdha said, that India is the only surviving civilization over 10,000 years because it recognized this fact. It recognized diversity, it celebrated diversity, and also the unity behind that, the principle of Advaita. I think this is the message we have to take. Friends, as the video was being shown, when I was working on supercomputers, I was concerned that India speaks so many languages, 1700 languages which are told. We have now 22 languages written in 10 scripts. And my challenge was, if computers, the revolution of computer has to be brought before the people, our computers must be endowed with all languages, all main languages of the world, which is written in different languages. And while working on that technology, I came to realize all these languages which appear different, we call Malayalam as a jalebi, and we are not able to appreciate South Indian languages and scripts. South Indian scripts, where sometimes there are different scripts. But I came to know that all are represented in computer only as strings of zeros and ones. Actually in one symbolism and its negation, 0 and 1. Even in our own brain, we speak different languages, but representation is only unique, done as appreciated by Panini, called a meta-language, languages of all languages. So we need to appreciate that, friends, and we have to carry this message to the world. The world torn because of religions, different faiths, different languages, different nations, and for our own India, we have to bring that unity. And that's why our forefathers have chosen the theme of India as unity in diversity. The day we admire this diversity, not only admire but celebrate diversity across each one of us, then we can fulfill the dream of Swami Vivekananda. And I will end with that. Swamiji was asked the question, Swamiji, you speak on philosophies. This was in 1897. He had returned from America and also the tour to UK and Europe. And he was traveling across India. So Swamiji, you speak on philosophies, religious, but when will my motherland get freedom? Swamiji paused for a moment and he said very calmly, that time has not yet come. But I promise you, I prophesy that 50 years hence, India will get freedom. And India got freedom. 1947, India got freedom. But he made another prophetic statement, which Professor Vishwanath Karad would have told before you, that 100 years later, India will create prosperity and wealth and culture and education, which he has never created in the entire history. Friends, that time has come. We have to fulfill, you have to fulfill that, the prophecy which was made by Swami Vivekananda, and that can be fulfilled only if you have the fundamentals, if you have the foundations, embracing diversity and internalizing unity across the nation, and then we'll embrace the world, and then we'll conquer the world with your thought. Thank you very much, sir. और अब हमारे आज के दूसरे मुख्य वक्ता, आज के सेशन के जाने माने योगी गुरु और ईशा फाउंडेशन के फाउंडर, दिग्दृष्टा, मानवतावादी, आध्यात्मिक गुरु, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का सानिध्य हमें प्राप्त है। मैं आमंत्रित करूंगी सादर सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी को, वो आए और हमें संबोधित करें। जननं सुखदं मरणं करुणं
Sakalam karunam samayadhipate akilam karunam. My pranams to everyone. Nations are made on the basis of the commonality of its subjects. In terms of race, religion, ethnicity, language, ideology, or just an iron-handed rule which makes a nation. But not so with this nation which we today know as India, and the nation that we have known as Bharat for many millennia. It is a wonder of wonders for the rest of the world as to how is this a nation. I'm sure every Indian also once in a way wonders, how the hell are we one country? What is it that is making us into one nation? If you look back, as others were mentioning, if you drive 50 kilometers, people speak a different language, they eat different kind of food, they look different, they speak… everything is different about them. What is it that holds us together as one nation? The word Bharat itself comes from the root and a combination of three words. Bharata means bhava, raga and thala. Bhava means sensation. When I say sensation, everything that you know as life is actually in the form of a sensation. It may not be sensational, but it is a sensation because you know life only by seeing, hearing, smelling, tasting and touching. These are the sense organs. Visual sensations, auditory sensations, olfactory sensations, like these various sensations it's creating and creating an experience of life within you. So the very basis of your life is sensation, that is the bhava. Raga means the color. The word raga comes from the source, ra means the sun, ga means one that comes out of sun. So the color is not present in the world. The color is flowing out of the sun. The 7 colors which make the white light, that is where the color is coming from. Color is flowing out from the sun, so it is raga. And that is the source of our life. All of us are solar powered, whether you understand this or not. The whole planet is solar powered. Everything else is only a consequence of the fundamental solar energy which makes this happen. And thala means the rhythm. The rhythms of day and night, the rhythms of seasons, the rhythms of sun and moon, the rhythms of the universal and the cosmic nature, and of course the rhythms of human body, mind, emotion and energies. This is a nation that was built on a dream of achieving a right rhythm with which we can arrive at the ultimate level or ultimate status of well-being, both in the inner and outer worlds. In this search, in this longing, in this striving to find that rhythm, we became a nation of seekers. I want you to understand this. When we say we are a nation of seekers, that means we are not believers. There is no established belief system. There is no stone-cast moral code in this country. This culture imbibes without any inhibition. Whatever works, we are willing to take it on. It doesn't matter for where it comes. I heard that Shivaji is your favorite hero. You must understand this.
that today, one of the Shivaji's clan, we have made him a superhero in Tamil Nadu. You have to appreciate the Tamil people. You're not getting it? You know, Rajinikanth is a Marathi. You need to appreciate this. The Tamil people have taken on a Marathi hero as their superhero. This is India. Tamil people are very proud of their language. Their whole entity is on the basis of language. But their hero is a Shivaji clan. They have no issues about that. So why are we like this? We are like this because the fundamental nature of this nation has always been seeking. Seeking for what? So people looked at it, initially you seek for survival. When survival is taken care of, pleasure. When pleasure is taken care of, general well-being. When that is taken care of, then what? Ultimately, a human intellect and human intelligence realizes the most valuable thing in the existence is freedom. So we are seekers of freedom. The only and only goal, if you are born in this culture, is mukti. This is a very misunderstood word. When I say mukti, people think, oh, should I go up or go down? Well, let's understand this first. Are we living on a round planet or a flat planet? Please tell me. I'm on a flat dais. Are we living on a round planet or a flat planet? I want to hear that. Round. I don't know how you came to this conclusion. Walk up and down this hall and tell me, is it a round planet or a flat planet? In your experience, it's still flat, but we know it is round for various reasons now. So on this round planet, you are not even sitting on the North Pole, you are sitting at a certain latitude and it's spinning on top of it. Now, if you look up, invariably you look up in the wrong direction, isn't it? Does anybody here or anywhere know which is up and which is down in this cosmos? Is it somewhere marked, this side up in this cosmos? You do not know which is up and which is down. You do not know which is forward and which is backward. There is only one context to your life as to which is inward and which is outward. If you do not exercise this context, you will cease to be existential, you will just become psychological. Contexts that we created for convenience, if you take them as real, you will get divided. So this is the fundamental, that seeking for mukti, seeking for liberation, seeking freedom means becoming free from ignorance. When I say ignorance, do not define ignorance as what you do not know. Ignorance is the limits of what you know. The boundaries of what you know is your ignorance. What you do not know is not your ignorance. So, based on this, the whole nation became a nation of seekers. This may be a little absent today in the urban population, but even today, if I go to a village, if I speak to an illiterate peasant, if I ask him, what do you want? He will not ask, I want a golden horse. He will say, yeah, mukti. He has not read any scriptures, he has not heard any teachings, but it is so deep-rooted. It is this one thread that we are a nation of seekers. Though we look different, we eat different, we speak different languages, everything is different about us because the seeking. When you are a seeker, you will always become an individual. You cannot form a group. If you are a believer, you will form a group. Somebody believes one thing, you believe something else, there is bound to be a quarrel somewhere. So this fundamental that we have, that in this culture, heaven is not the highest thing, God is not the highest thing, the ultimate seeking is always for freedom. Freedom from ignorance, freedom from everything that we are limited by. That which changes us, that which limits us, that which sets boundaries around us. As a nation, we have come a long way in many ways. It has been 1,000 years of continuous invasions, but still, we have been chewed, battered, distorted, but we haven't lost it. That is the beauty of this, because it is individual.
It is not organizational. It is not something that's organized. This is something that's bubbling in every heart. Is this cultural? Is this religious? Is this spiritual? No, this is just human. It is a natural human longing to become free from everything. It is just that when you're denied something or when you're deprived of something, you may believe something is very high. I happened to be in Tel Aviv. I was supposed to speak to a group of people and I was to arrive there at noontime and address them, but because of some delays in the flight, I landed at 6 o'clock, 6:30 is my talk. This is 30 years of Isha. In these 30 years, I have not been late to a single appointment till now. So I didn't want to break that, so from the airport I went straight. So I discovered when I went there, I was to speak in a restaurant. You eat in a restaurant Some restaurants are famous for food, some are famous for the ambience that they set, but some are famous for the conversations that happen in the restaurant. So it seems in Tel Aviv, the most intelligent conversations happened in this restaurant and not in the parliament. I went there, people were greeting me and one man came and said, "Shalom." I said, "What does that mean?" He said, "This means, this is the highest way of greeting." I said, "That is your opinion, but what does it mean?" He said, "It means peace. This is the highest way of greeting." I said, "Why would peace be the highest way of greeting unless you're born in Middle East? In South India, if somebody comes up to me in the morning and says peace, I will ask him, what's wrong with you? Whatever you're deprived of becomes the highest thing. If you're deprived of food, that becomes the highest thing. If you're deprived of love, that becomes the highest thing. If all these things are taken care of, one thing that a human being will always long for is to be free from everything. To be free essentially means to move from a compulsive nature of existence to a conscious nature of existence. This is what is needed right now in our country as a nation. We evolved a system as to how to develop an individual human being. We never evolved a system as to how to develop a society. This system we called as Samskriti. Today, this word is being dismissed as culture. It is not culture. Sam means equanimous, kriti means to do. To do life in an equanimous manner. Another meaning for some is exuberance. Another meaning for some is well. To do your life in an equanimous way, in an exuberant way, and doing it well. If you do this, everything around you will be okay. Today we are trying to impose moral codes upon our society. You need to understand, India is a society without morality because we always relied on stirring up our humanity rather than depending upon the morality. The morality of one person is an obscenity for another person. So we always had means and ways and tools as to how to stir up the humanity within us, and that humanity has been the basis of this nation. It is that fundamental human longing to become free which has been the main thread, which is holding all these multiple cultures together as one nation. Though it is being propagated like India was born in 1947, no. The other cultures everywhere in the world experience this as one nation for thousands of years. Even though there were many political entities, many times over 100 entities, in spite of that people saw it as Bharat because they saw these unique people who did not believe in anything particular, who had no moral sense, but they were perfectly on the track because they were not a bundle of morality, but an effervescent humanity. This has to be brought back into India because when you are a seeker, you are not in collision with anybody. When you are a seeker, there is a certain humility about you because you have not assumed anything. You can become a seeker only when you realize the immensity of I do not know. If you realize the immensity that you do not know so many things about the existence, with so much science and technology, we still cannot figure one single atom in its entirety. That is the reality of our existence. If we understand this, if we operate from this, that we become seekers,
India can once again find its glorious days. When I say glorious days, right now everybody is talking about economy. 1,000 years ago, India contributed to the world in terms of 53% of the world's economy was India. 500 years ago, we were about 26% of the world's economy. When the British left us in 1947, we were 3.6% of the world's economy. Today, we have risen to 6%. But as a population, we are almost 25% of the world's population. We must at least achieve this 25% of the world's economy in the remaining 5 to 10 years. If we do not do this, we will keep our people subjugated forever. We are at a unique time. That is, for the first time, for the very first time, we have the necessary tools, we have resources, we have the capability, and we have the technology to address every human problem in this country and the rest of the world. This generation has a unique opportunity that we can move about 600 million people from one level of existence to a completely different level of existence in an incredibly short time. Because we have all the means in place, the only thing that is missing is an inclusive consciousness among the people. And this is going to be the fundamental challenge, that we will not identify with little identities that we have around us. We will not demolish them either, because you cannot demolish that, but a larger identity of the nation. The youth of India today has this tremendous possibility, responsibility, and a privilege in front of you that you could change the way people live in this country. We have had a whole lot of people, almost 3/4 of this nation's population has had such a bad deal. Such a bad deal, a large part of them are still in an extremely bad situation where about 29 rupees is wealth per day. When we are in such a situation, we have an opportunity to change this. We have everything in place. Only you and me have to get into place. That's the only thing that's missing. To make India once again a glorious nation. When I talk about glory, I'm not talking about the economic or the military prowess of the nation. Yes, that is also needed. But more than that, India should embrace the world like a garland. India is capable of bringing a new level, new paradigm of success into the world, a new paradigm of what it means to be successful in terms of bringing human well-being. We have the necessary technologies and the wisdom to make this happen. We have to make this world a beautiful place, not by conquest, not by capturing, but by captivating the world. This is a possibility that you're sitting on. But now, when you sit here as a youth, one of the greatest challenges that we have today, we have had such a bad deal with leadership. It's a bubbling nation without direction because of lack of leadership. And this is because we have subverted democracy in so many different ways that today we are almost going back to a system of monarchy where if your father is in position, son will naturally get to that position. This happened at the time of Akbar. You definitely heard of Akbar and Birbal. Due to some extraneous situations, Akbar got separated from his mother when he was just an infant. And because of this, they got a surrogate mother for him who would breastfeed him for a certain amount of time. Later on, that lady also had a son who was a few months older than Akbar. And out of his gratitude, he said, we drank milk from the same mother, so he's my brother. Out of this gratitude, he gave him a few villages to rule. But by the time he was 30, this boy lost everything that he had and again came back to Akbar. Akbar welcomed him as a brother, as an elder brother, treated him well. And he stayed in Akbar's court, saw the grandeur of the court, the talent that had gathered there, and above all, he was very impressed with Birbal. When the time to go came, he became very melancholic. Akbar asked, what's the matter? He said, see, you become a great man because you have such wise people around you. If I only had such people around me, I would also become a great man. So Akbar said, what should I do? So he asked, can I take Birbal with me?
Akbar said, "You are my elder brother. How can I say, no, you can take him?" So he called Birbal and said, "My elder brother wants you, you need to go with him." Birbal's eyeballs rolled, he couldn't understand this. He said, "No, he is my elder brother, we drank milk from the same mother." Now, next day, Birbal said, "Akbar, O king, this is not the thing, your elder brother deserves better than me. He can take my elder brother." So it looked like a good idea. Akbar didn't want to lose Birbal anyway, and he asked this boy, he said, "Yes, if Birbal is so smart, his elder brother must be even smarter, I will take him." Next day in the court, Birbal came with a bull on the rope. Akbar looked at this and said, "What is this? What are you trying to do?" He said, "Oh my lord, this is my elder brother. We drank milk from the same mother." This is happening to us in this country. Our identity is unfortunately not crossing the biological limits. Somebody in Tamil Nadu was circulating jokes about this. They said, this is all the mistake of Albert Einstein because he did not state it clearly. He said everything is relative and our people understood it as relatives are everything. This one thing has to change. If democracy has to thrive, who your father is should not be the issue. Who you are should be the only issue. The youth of this country has to establish this. If all of us do not have equal opportunities, there is no way democratic process can ever succeed. If all of us do not vote in terms of our own conscience, if you're going to vote in mass because of religion or caste or creed or whatever, we will only have feudal system in the form of democratic process. A democracy, you are the youth parliament today. This can be successful only if nobody asks you who is your father. They only see who the hell you are, and that's all that matters in this country. If we don't do this, there is no democracy. It is just a mockery of democracy. Thank you very much. I'm supposed to take questions. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Other questions? No? और अब हम गुजारिश करेंगे अपने दोनों मुख्य वक्ताओं से, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी से और पी भटकर जी से। आप आएँ और आज हम यहाँ पे कुछ सवाल उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के सवाल हैं आप दोनों के लिए। सबसे पहले जग्गी वासुदेव जी के लिए सवाल है पोडियम नंबर 4 से। पोडियम नंबर 4 से सवाल आ रहा है। कंचन जैन आगरा उत्तर प्रदेश से आपसे सवाल करेंगी। Good morning, sir. This is Kanchan Jain from the Albag Education Institute, Agra. Sir, my question is, as today we are talking about unity on one hand, and on the other, we have reservation in terms of admissions in colleges and job opportunities. So, isn't it that it is bringing diversity in our thoughts? Because unity of mind is the greatest necessity of the time, and this is bringing the diversity in our thoughts. So, how can we? What measures can we have to remove it? जी, आपसे सवाल किया गया है जग्गी जी। This whole reservation policy, when it was envisioned, it was to be for a short period of time to correct a certain ill which had taken place, a certain injustice which had happened for thousands of years. A certain injustice which had occurred for thousands of years. To fix that, we thought for a certain period of time, we will give a certain segment of people an extra advantage so that they can come level with the rest of the society. But unfortunately, we have not been able to fulfill this vision. Even today, in villages across the country, if you belong to a certain caste or creed, you cannot even enter a tea shop and have a tea. You're not supposed to walk through certain streets. Everything is separate. It's a segregated society even today. If we do not change this,
and change this very soon. And the only way to change it is to educate and skill India. If you do not skill India, you will kill it. So this has to happen at the earliest possible time, because any kind of reservation, if it lasts for too long, it'll become a discriminatory process, which is what you're talking about. So this onerous responsibility is there that the discriminatory process that is being even today practiced in the villages of India has to go. Youth have a role to play. We have done many things in this direction, but still it has not been solved. It is a huge problem. When such a big problem is there, taking away that little advantage they have, it needs to be reviewed every few years, whether it is necessary in a certain area or not. But such right-thinking policies are not possible. These things are all happening on electoral basis. Whether we will win the election with this policy or not, that has been the only goal. So it is very important that it is addressed properly. This is one thing that you can do, whichever constituency you belong to. The legislature members or the parliament members that you elect, the youth should participate in this and call for a debate with the people who want to stand for election, that, see, this is the statistic in our constituency. Do we need this or not this? Can we change it or not? A policy has to come on the national level that it is selective, not across the nation. In urban areas, definitely it may not be necessary, but in many rural areas it is necessary because they have been disadvantaged for thousands of years. धन्यवाद। और अगला सवाल पोडियम नंबर 6 से इधर राइट हैंड साइड से विजय पी भटकर जी के लिए जॉबिन मैथ्यू अपना सवाल करेंगे। आप केरला से आते हैं जी। जॉबिन, अपना सवाल करें पोडियम नंबर 6 राइट हैंड साइड से। Hello, my name is Jobin Mathai. I'm coming from Kerala, and I have a question to both speakers. Any one of them can answer. In the topic unity in diversity, the question is, the government decides on aiding different states on the basis of number of MP in the ruling party. In that case, minority and opposition party ruled states are neglected, and we need to find more democratic systems to bring them about and to promote unity in this great nation. I think I will pass this question. Okay. So, see, this needs to be understood, whether we like it or we don't like it. Democracy is a number game. With how much subtlety you play this number game, or with how much crudeness you play this number game, is left to each individual and a system. Right now, the number game has become very crude. It needs to be played in a more subtle manner. But democracy is a number game, and inevitably, numbers will be important one way or the other. About bringing in the educational policy, I feel now that with technology, we are so hugely connected to every part of the world. The only thing is a certain level of cleanliness as to what happens, that nothing beyond education should happen in a university. If that one thing is fixed, the rest should be just left to private sector. Many colleges, many universities should come up. If they're not good enough, you don't go there. If they're good enough, you go there. Let people choose. What is good will survive, what is not good will die. This is the way, because we have taken a capitalistic step. We have taken a step towards market economy. Every 2 days, we cannot be looking backward. Once you've taken a step towards market economy, market should be the ruling place. Otherwise, it will not work. शुक्रिया। और अगला सवाल पोडियम नंबर 5 से इधर राइट हैंड साइड से डॉक्टर विजय भटकर जी के लिए सवाल पूछेंगे एन प्रभा, तिरुचि, तमिलनाडु से। एन प्रभा, पोडियम नंबर 5 से राइट हैंड साइड पर। Good afternoon, sir. Good afternoon. I'm doing my post-graduation in chemistry in Sita Lakshmi Ramaswamy College. My question is, sir, in the education system, there is a habit of allotting different cut-off marks for different caste system. Here, where is the equality between the youths and what the word talent really means? Now this question is coming again and again.
I am the chairman of IIT Delhi and IIT JEE and many other examinations. This discrimination of cut-off marks for different communities, what is the justification for that? And as Jaggiji rightly said, we must recognize, and you have perhaps not seen, that for hundreds of years, we had such a discrimination. Many people were not allowed to study. Women are not allowed to study. We didn't have facilities for them. As you said, we couldn't even enter certain areas and temples. I think this has been there for long, and we have to correct it. Now, as we are opening up, even our elite institutions, it is taking more time than we ever thought. I believe that one of the instruments which will transcend this is technology. Technology reaching everywhere, like mobiles have reached everywhere, irrespective of economic levels and castes. Similarly, the computers will reach everywhere. So one of the quantum leaps we can take for this, achieving this equality is this one. But until then, this process will remain until we can justify, we can do the justice. So there is nothing really wrong with that. पोडियम नंबर 2 पर सीधे चलेंगे। रूपाली कदम वहां है, पोडियम नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड पर। डॉक्टर विजय भटकर के लिए एक और सवाल। रूपाली कदम सतारा महाराष्ट्र से आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे पोडियम नंबर 2। What you want to say about the problem of Belgaum? Do you find unity here? What is it? Belgaum. Belgaum. You're talking about Belgaum? Belgaum. I'm not from Belgaum. Well, I think when our states were to be created, there could have been different visions of creating states of India, and Pandit Nehru has one vision, and many people had, and that was linguistic division was thought about. And there will be always issues. There will always issues of any kind of divisions of this kind. But we could have resolved this as mature states, this problem of rivers, problems of towns and the borders, and how to make that when people speak both the languages. But I think what is the thing that we are trying to impose, without recognizing this language or this one, not respecting that, that is creating the problem. Any kind of division would have created that problem. शुक्रिया। और आखिरी सवाल हम लेंगे यहाँ पोडियम नंबर 1 से, लेफ्ट हैंड साइड से। पोडियम नंबर 1 देवाशीष तिवारी हमारे साथ हैं, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। देवाशीष तिवारी लेफ्ट हैंड साइड पे पोडियम नंबर 1 से। A very fine good afternoon to the highly reverend dignitaries. My question is for Jaggi Vasudev ji. Ki 65 years has been passed since India attained its independence. Why still now we are failed to revoke Article 370 of the Indian Constitution, which gives special status to Jammu Kashmir, and why the issues like Telangana and the monster of society like Akruddin Owaisi still existing in the society? We have made many blunders in the making of this nation, but there is no point going on dwelling upon this. There are still people talking about, why did we divide the country into India, Pakistan, Bangladesh? Why couldn't we have one country? Yes, these are whatever you want to call it, they're mistakes, blunders, or natural outcome of those days, of the situations existed there. There is no point going on debating those things. Do we want to move forward, or do we want to be going on harping on the past problems? Kashmir, a part of it has come to India and a part of it has gone outside. I think we have to settle for that, because it is not like old times. You can wage a war and win a war. If you wage a war now, nobody wins a war, everybody will lose. We have come to that time in history of time. So it's very important that we look forward about integrating Kashmir into India with whatever 370. It is already an integral part of India. We hold elections there, there are elected state governments, but still there is a whole lot of people who feel otherwise. This needs to be settled with economic development. The same thing the girl asked about Belgaum. You are free to transact across the borders of the state. The state border is only an administrative border. Technologically,
in terms of economic process, in terms of education, in every other way. You can go to whichever state you want. I told you can become a superstar in Tamil Nadu. So, let us not go on with these things because this will not allow us to move forward. About Telangana is a different issue. I believe by the end of this month it's going to be resolved because over 1,000 people have immolated themselves in the last few years for this Telangana cause for various reasons. I hope that one settles. But I'm saying you need to understand this even within your family. If property is divided between two brothers, someone will always feel injustice has happened to him. There is no end to this. Somewhere we have to see how to go ahead and make our lives rather than keep on looking backward or constant looking at the rear view mirror will make you crash. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का यहाँ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, आपका धन्यवाद। और अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी युवा सांसद हिमाचल प्रदेश से। जी हाँ, बिल्कुल आप सब पहचानते हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। आप लगाएंगे मेरे साथ, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सबको नववर्ष की, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 12 जनवरी है, युवा दिवस है और उस महान नेता के जन्मदिन के दिन आज युवा दिवस मनाया जाता है, जिसको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। और भारतीयों के लिए अगर कोई यूथ आइकॉन है तो वो केवल स्वामी विवेकानंद है और आज उनका 150वां जन्म दिवस है, उस पर भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी ये खुशकिस्मती है, मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज इस मंच से मैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव के साथ साथ माता प्रसाद पांडे जी के साथ और महान यहाँ पर जितने मंच पर लोग बैठे हैं इनके साथ आज आपको संबोधित कर रहा हूँ, वो भी 150वीं जयंती के अवसर पर मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके सामने कश्मीर के बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की या कन्याकुमारी में समुद्र की गहराई की बात नहीं करने आया। मैं भारत में बोले जाने वाली 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस या 438 अनऑफिशियल स्पोकन लैंग्वेजेस या 1000 डायलेक्ट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करने नहीं आया। मैं आपके साथ संविधान पर बात नहीं करूँगा और ना ही स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, ना ही भारत की 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं उस विविधता के बारे में, उस डाइवर्सिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आज मेरे सामने मौजूद है और वो हैं आप। मैं उस डाइवर्सिटी की बात करना चाहता हूँ, उन स्टूडेंट्स की, उन यंग चेंज मेकर्स की जो आज मेरे सामने मौजूद हैं, जो पूरे देश में से चुने गए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। मुझे कहा गया कि देश में महाकुंभ मनाया जाने वाला है, आप डुबकी लगाने जाओगे। मैंने कहा मेरे लिए तो आज का दिन महाकुंभ है, जब हजारों युवा छात्रों के सामने, हजारों युवा छात्रों और युवा नेताओं के सामने आज मुझे इस शिक्षा के केंद्र पुणे में प्रोफेसर कराड़ जी के यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मित्रों, माता प्रसाद पांडे जी ने कहा कि आप भविष्य हैं। आप केवल भविष्य नहीं, आप वर्तमान भी हैं। भारत को कल आप नेतृत्व भी देने वाले हैं, लेकिन आज भी अगर भारत को कोई नई दिशा देगा और दशा कोई सुधारेगा तो वो केवल आप और हम मिलकर इस देश का युवा सुधारेगा। इस देश के युवा, और मैं कई बार ये कहता हूँ क्योंकि भारत भर में घूमने का, प्रवास करने का अवसर प्राप्त होता है, अगर भारत का सबसे बड़ा हथियार कोई है तो इस देश का युवा और युवाओं के विचार और उनकी आकांक्षाएं, उनकी एम्बिशंस हैं।
भारत वो भूमि है जहां पर एक राष्ट्रपति एक अल्पसंख्यक एक मुसलमान भी हो सकता है, भारत का प्रधानमंत्री एक सिख है और भारत की सरकार चलाने वाली कोएलिशन पार्टी की चेयरपर्सन एक क्रिश्चियन है। ये केवल भारत में हो सकता है, दुनिया के किसी और देश में नहीं है। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट आर्मी का अगर हेड कोई है, अगर हमारे जनरल है, तो वो एक सिख है। ये वही भारत देश है जहां पर 11 खिलाड़ी अगर हमें मुंबई में विश्व कप जिताते हैं तो 120 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कुराहट वो लेकर आते हैं। लेकिन जब एक कैच छूट जाता है तो वही करोड़ों दिलों को तोड़ते भी हैं। ये वही भारत देश है जहां पर अंग्रेजों की एक बहुत ट्रेंड आर्मी के सामने एक महात्मा ने हमें आजादी के पथ पर चलाया, हमें नेतृत्व दिया। ये वही भारत महान देश है। मित्रों, ये वही भारत की महान भूमि है जहां पर महाग्रंथ लिखे गए, चाहे वो महाभारत के हों, रामायण हो, कामसूत्र हो या मेडिटेशन या योगा की बात की जाती हो। अगर मैं अपने हाथ की इन 5 उंगलियों की बात करूं तो 5 भी एक समान नहीं है। उसी तरह भारत में भी हम सब लोग एक समान नहीं हैं, लेकिन हर कोई यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, हर किसी का एक महत्व है। और हम जब एकजुट हो जाते हैं तो इसमें और शक्ति आ जाती है। जरूरत है भारत की इस शक्ति को बनाए रखने के लिए, जरूरत है भारत को एक साथ बनाए रखने के लिए। हमें चुनौती उन लोगों से नहीं जो गांव से आकर शहर में काम करना चाहते हैं। वो हमारी रोजी रोटी नहीं छीन सकते, वो हमारे लिए चुनौती नहीं है। लेकिन मुंबई में बैठकर अगर जब कोई भाषण करता है कि हमें चुनौती है उन लोगों से जो बाहर से गांव से यहाँ पर आते हैं, हमें चुनौती उन गरीब से नहीं है, हमें चुनौती उस नेता से है जो इस देश को तोड़ना जानता है, इस देश को तोड़ने की तैयारी करता है। हमें बचना है ऐसे नेताओं से, हमें बचाना है अपने देश को आने वाले समय के लिए। इस देश की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो इस देश की अनेकता में एकता, इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए आज देश की युवा पीढ़ी को आगे आना है। आप में से कुछ लोगों ने यहां पर कुछ बात उठाई रिजर्वेशन को लेकर। क्या ये केवल सरकार को करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितने वर्षों तक करना चाहिए था? क्या ये उन परिवारों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पिछली 3 पीढ़ियों से जिनके परिवारों ने रिजर्वेशन का फायदा लिया होगा, आज वो आगे आकर कहें हमारे परिवार को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, उस गरीब को देना चाहिए, उस गरीब को देना चाहिए जिसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता है। मुझे उस दलित को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने की, उस परिवार को आगे बढ़ाने की जरूरत है जिसका बच्चा आज आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक कलेक्टर का बेटा या कोई और उच्च पद पर बैठे व्यक्ति का बेटा, जिसके कई परिवार की कई पीढ़ियों ने उस रिजर्वेशन का फायदा उठाया, लेकिन दूसरे अपने साथी को फायदा नहीं उठाने देते। ये दुर्भाग्य है इस देश का। आप में से कुछ लोगों ने कहा, एक युवा साथी ने कहा कि 370 धारा को खत्म क्यों नहीं किया जाता। मैं इस विषय के उसमें नहीं जाना चाहता कि किसी ने वो ब्लंडर किया था, आज देश को भुगतना पड़ता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जब देश के सामने वो संकट आया कि हजारों नौजवान हमारी सेना पर पत्थर मारते थे, तो देश में किसी ने आवाज नहीं उठाई। आपके इस भाई ने तिरंगा कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक गया था और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव ना आए, तो मैंने वो आवाज उठाई थी। मीडिया के मित्रों ने कहा कि आज आप कश्मीर की बात क्यों उठाते हैं, कौन आपके साथ आएगा, कौन आएगा साथ में कि तिरंगा जल रहा है तो उसको बचाने के लिए। मैं तब भी आगे गया और इस देश के लाखों नौजवान मेरे साथ जुड़े और हमने कश्मीर में जाकर हमारे युवा साथियों ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया और दिखा दिया ये तिरंगा केवल कुछ गज का कपड़ा नहीं है, ये तिरंगा हमें वो ताकत देता है। इस तिरंगे के नीचे हर धर्म, हर मजहब के लोग एकजुट होते हैं और भारत के लिए अपनी जान तक देने के लिए अगर आगे बढ़ता है तो इस देश के हर धर्म, हर जाति के लोग बढ़ते हैं। यह तिरंगा हमें वो ताकत देता है।
लेकिन जब कोई अलगाववादी उस तिरंगे को जलाता है तो हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठा हर वो नौजवान इस देश की माटी के लिए मरने के लिए आगे बढ़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब भी भारत को ऐसे युवाओं की जरूरत होती है तब युवा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे केवल एक निवेदन करने आया हूं। मीडिया में दिखाया जाता है कि राजनीति गंदी है, राजनीति में गंदे लोग हैं, ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी कह दें कि एड के क्षेत्र में या फिल्मों के क्षेत्र में सब लोग साफ सुथरे हैं, धर्म या बाकी डॉक्टरेट के क्षेत्र में, शिक्षा के व्यापार में जुड़े हुए लोग सब लोग अच्छे हैं। हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन ये जरूरत है आज राजनीति की, आज के समय की, कि और ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग आए। और आपसे ज्यादा अच्छे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप यहां पर हजारों की तादाद में बैठे हैं, देश भर के कोने कोने से आए, और पिन ड्रॉप साइलेंस यहां पर रहती थी। इतना डिसिप्लिन क्राउड मैंने कहीं पर नहीं देखा। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, आपको सलाम करता हूं, आपको सलाम करता हूं। और राहुल जी, मैंने आपसे कहा था ये क्रेडिट आपको जाता है। आज इंडिया टुडे में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वेयर इज राहुल, वेयर इज मिसिंग। राहुल तो यहां पर है, ना जाने वो किस राहुल की बात कर रहे थे। लेकिन युवाओं को राजनीति में प्रेरित करने के लिए अगर सभी राज्यों से महाराष्ट्र के इस एक कोने में आपको बुलाया गया शिक्षा के केंद्र में, तो उसका अगर क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को जाता है तो इस युवा नेता राहुल कराड़ को जाता है। जोरदार तालियां राहुल जी के लिए, शुक्रिया। और एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अनुशासन के साथ यहां बैठकर सबको सुना है। मैं केवल अंत में इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि बहुत सारी चुनौतियां हम सबके सामने होती हैं। अंत में मैं स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। डर को दूर करना है, और डर को जब दिल से निकाल फेंकोगे, मस्तिष्क से निकाल फेंकोगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। भारत को महान शक्ति बनाने के लिए, भारत के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें युवा शक्ति की जरूरत है। क्या आप भारत के लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहोगे? कौन कौन बनना चाहेगा? सब लोग बनना चाहेंगे। आपका स्वागत है, आइए, मैं आपके साथ हूं, और भारत को महान शक्ति बनाएं। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बहुत शुक्रिया। और बंधुओं, और बड़े बड़े वक्ता और बड़े महान लोग हमारे इस मंच को सुशोभित करने वाले हैं।